आप लोगों को इट्स जस्ट लाइक एवरी डे आई एम आप लोगों को हर रोज मैं वेटिंग पे ही रख रहा हूँ, सो आई डू अप्लाइज फॉर दैट, बट क्या करें अभी। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ब्लॉक 3, आई थिंक ब्लॉक 3 इज अबाउट सम mapping and projection and some other things would like to discuss about today. So I think today 8 or 9 people are there, because it was about to start around 5 p.m. Na? That was our scheduled time. But okay, so Manjit Dalal is there, Pankaj. Some new faces are there, I think, today. And as usual, Andrews, Mr. Andrews is there. So just a minute. So आप लोग whether you have installed that QGIS that in my last class I was talking about that. Anyone you have installed that or not? Hello. हेलो. हाँ पंकज. Yes, I installed it, sir. इंस्टॉल ना. एंड whether any of you excluding Pankaj? I can see the face of Raj Yadav. Okay. So whether my slide is you can see the slide, it is you can see na, Yes, sir. is visible na. Okay. So today actually we will be talking about some basics of mapping. तो अगर आप लोगों को आता है, क्योंकि बहुत so many students are there, those who are already working in some organization, then definitely they know about it. And also if you are having some background of like geography, geology, then definitely you will be knowing about different aspect of mapping. Raghuvans, please mute your audio. Thank you. So see, today like we will be trying to cover all these aspects like basics of maps. So we'll talk about some map projection, coordinate system, and also we'll be trying to understand different symbols and different aspect of maps actually, and what are the procedure or how to read the maps, and finally your interpretation of Survey of India topographical maps. So these are the broad unit of your block 3, that is basics of maps. So actually in addition to today class, I think for this is your one, just a minute. Just wait for me. Today is 16 na. Yes, for your MGY 101 we are having actually total 6 classes. So today is the 4th class. So then on 19th and 20th we will be discussing about the that means overall we have to complete in the coming 2 classes only. So basics of maps today we'll try to complete it. So how many of you actually familiar with maps, or you know about maps? What is a maps and types of maps, and like practically whether you have prepared some maps or not?
before having a discussion on this, we should know that whether you are like aware about maps and different aspect of maps. Anyone like Raj Yadav or maybe Sumit Narayan or someone else want to respond? Or Andrews, do you want to speak something? Whether you are like aware about the maps? Whether my voice is audible or not? Actually, I am a little bit confused that whether you are able to listen me or not. Yes. Hello. Your voice is very much audible, sir. So you people should respond. Now I'm asking you guys like Andrews and some other Manit, Pankaj Singh, I think Raj Yadav and some others are there, because it should be a two-way traffic. It must not be a one way, because until and unless we are not going to discuss with each other, then things are not going to be very smooth, and you will be facing issues. You will have some doubts and other things, because we are having very little classes, and in those stipulated time actually we have to complete each and everything. So again, I am asking whether you people are aware about maps and different symbols and scales, all the things or not. Yes, Particularly, sir. yeah. So Yes, what sir. type of, Yes, sir. yeah, Andrews, what type of maps actually you have worked? So we're going to chronopath map and some physical map, sir. Okay. So but whether by using a particular software like ArcGIS and so other software like QGIS, whether you Yes, worked sir. on that? RGS and QGIS, RPro. Okay. So by utilizing those software, you have prepared maps. Okay. Yes, sir. Then I think it will be like very easy for you for today's session. And but those who have not at all, they are like exposed to this is all type of maps and all the things. It will be little like difficult for them to understand. But again, I can say that the course material or the content developed by IGNO is very fantastic, and whatever in my today's lecture, I have uh, extract the information from your study material only. I'm not taken from outside a single slide. Because why? Because thing is that when after this class, when we are going to study those things in a very briefly, you will be familiar with that. That's why. So now I am starting. Like just a minute. Yeah. So if anyone asks me ki, what is a map and what type of maps are there, then how to choose a projection, and actually can anyone answer what is a map actually? What do you think? What is a map, or what can be a possible definition of a map? Just don't go through any particular definition, but according to you, what is a map? Anyone? What do you mean by a map? हेलो. आप लोग मतलब इसको ऑन करके ऐसे छोड़ देते हैं क्या? जो क्लास जब होता है ना, ऐसे ऑन कर देते हैं, लॉगिन हो जाते हैं और उसको साइड में छोड़ के ऐसे रख देते हैं, या कैसे? हेलो हाँ. Hello, sir. यशपाल जाला. सर किसी भी अगर कोई भी इंटरफेस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करते हैं उसे मैप बोलते हैं सर. आई थिंक. और अगर मैं बोलूं कि जो अर्थ है ना, हमारा जो धरती है, धरती का कुछ भी चीज हो, वो एक 3D फॉर्मेट में है ना. 3D फॉर्म में है या नहीं, बताओ. 3D में है ना. जी सर. उसको अगर हम मैप में क्या है कि हम एक 2D सरफेस ना, एक मतलब एक
पेपर में हम उसको देख रहे हैं ना, नहीं, नो डाउट आज की डेट में हम 3D मॉडलिंग कर रहे हैं उसको, वी कैन यूज सम डिफाइंड सॉफ्टवेयर टू सी दोज 3D वर्ल्ड, बट बेसिकली अगर हम बोले पूरा एक सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बोले कि जो धरती में जो रियल वर्ल्ड में वॉट एवर इज अवेलेबल अर्थ के फीचर में जो भी है उसको हम एक पर्टिकुलर 2D फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है या नहीं? आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, यू आर हैविंग ए डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट इज वेरी लार्ज, यू आर हैविंग लाइक 1000 ऑफ किलोमीटर्स और वॉट एवर जो भी उसका एरिया है, इतना बड़ा एरिया को हम एक छोटा सा एक पेपर A4 साइज पेपर में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एम आई राइट? तो ये जो प्रोसेस है ना, कन्वर्टिंग द 3D रियल वर्ल्ड टू ए 2D वर्ल्ड, और एक पीस ऑफ पेपर में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप मैप बनाए उसको एक प्रिंट आप दे दिए ना, तो जो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो ये जो कन्वर्ट करके बाद जो हम आउटपुट मिल रहा है उसको हम मैप बोल रहे हैं। अगर मैं एक ये दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर डेफिनेशन, बट अगर हम मोटा मोटी अगर उसको हम समझना चाहते हैं तो इस तरह का है कि 3D वर्ल्ड को हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देन इन दैट प्रोसेस वी नीड टू फॉलो सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। लाइक सपोज आपका एक इक्वेटोरियल एरिया है और सपोज यू आर हैविंग सम पोलर रीजन्स है, तो क्योंकि बिकॉज अर्थ में ना सारा जगह ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ अर्थ इज नॉट इवन, ठीक है? तो सारा चीज को कहीं पे लाइक ऑनोलेटिंग है, कहीं पे लो लाइंग है, तो अलग अलग टाइप का टेरेन है। तो फॉर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। आप लोग दो जो है वर्कड इन लाइक जीआईएस सॉफ्टवेयर, तो आपको आप सम टाइम यू हैव टू चेंज योर प्रोजेक्शन, आप उसको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे चीज में अगर हम एक क्या बोलते हैं उसको समराइज्ड में अगर बोले कि वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द 3D सरफेस टू ए 2D वन एंड वी आर गिविंग सम सिंबल। आपका जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हम सपोज ग्रीन दे रहे हैं, ओके, एंड सपोज यू आर हैविंग सम रोड फीचर्स आर देयर, सम लीनियर फीचर्स आर देयर, तो वो लीनियर फीचर को हम एक लाइन में उसको ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर सपोज सम पॉइंट फीचर्स आर देयर, कुछ मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको एक पॉइंट में अगर आप सिंबल देना चाहते हो, तो इस तरह का बेसिकली पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, ये तीन चीज में हम सारा चीज को जो है पोर्ट्रेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा चीज जो है ये एक ओवरऑल डिस्कशन में कर रहा हूँ। तो लाइकवाइज फॉर डिफरेंट एरिया और फॉर डिफरेंट पर्पज ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, कोई आप बता सकते हो कि मैप का टाइप क्या होता है? एनीवन? anyone? Or if you don't know, then like आपने किस टाइप के मैप में काम किए हो वो आप बता सकते हो? एनीवन? मंजीत दलाल, कैन यू रेस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन? हेलो, I would like to clear one thing to all of you guys. Your attentiveness in class also recorded. It is also monitored, and uh, it always have an impact on your career and also on your learning process. Because if you are attentive in your class, if you listen to the teacher, if you ask questions to the teacher, so definitely it has a positive impact. And on the other hand, if you are not attentive, you are totally, I can say, negative, then that is also having a negative impact. So just keep it in your mind and try to have an interaction with me or any other teacher who are going to take your class. So try to very attentive. Okay. सर मैं बताऊं? बताइए ना, मैं तो बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ यार।
जी सर। तो जैसे हमें अभी यहाँ पे हमने बहुत सारी, मैं यहाँ पे गिर में जॉब कर रहा हूँ, तो सर बहुत सारी बर्ड को हमने टैगिंग किया है, तो उसका माइग्रेशन पैटर्न का मैप बनाते हैं, मूवमेंट का, लैंड यूज लैंड कवर पैटर्न का मैप बनाते हैं सर, यही था सर। अच्छा, हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप क्या है, जो बार्ड्स का मूवमेंट हो रहा है, आपका कुछ बार्ड्स ऐसा हो सकता है जैसे माइग्रेटरी बार्ड बोलते हैं, तो एक सीजन में दे कम टू योर एरिया आते हैं, तो इस टाइप का आप लोग जियो टैग कर रहे हो, जो टोटल जो एरिया है वहाँ पे वो आते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज को आप उसका कोऑर्डिनेट लेके दैट कोऑर्डिनेट को आप मैप में पोर्ट्रेट कर रहे हो, सो दैट इज जैसे आल्सो मैपिंग ना, यस एब्सोल्युटली राइट। तो जी सर, जैसे लायन का भी है, अपने एशियाटिक लायंस को भी कलरिंग किया है, तो उसके भी बहुत सारे मैप्स को हाँ कौन सा हैबिटेट को यूज करता है, हैबिटेट सुटेबिलिटी मॉडल के मैप्स और वो सब सर। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है, लाइक सपोज जैसे इन उड़ीसा व्हाट वी डू, एलिफेंट कॉरिडोर होता है, अच्छा जी आपका जो एलिफेंट जो होता है वो इन व्हिच डायरेक्शन और इन व्हिच रूट एक्चुअली दे फॉलो ऑलवेज, बिकॉज वो लोग अकेले नहीं जाते हैं ना, दे मतलब उनका एक झुंड होता है, उसके साथ वो जाते हैं, तो हम उसको भी ये करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि इन दिस रूट एक्चुअली द एलिफेंट दे ऑलवेज ट्रैवल, तो उस टाइप का मतलब दिस इज एक मतलब अलग अलग टाइप का मैप होता है। तो सपोज एनीवन कैन यू आंसर कि एक माइनिंग एरिया है, एक एरिया माइनिंग एरिया को यू हैव टू मैप, तो वहाँ पे लाइक वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स कि स्मॉल स्केल, आपका मीडियम स्केल हो गया और लार्ज स्केल हो गया। तो आप माइनिंग एरिया है तो आप किस टाइप का मैप आप मतलब यूज करना चाहोगे? So geological map. नहीं, मैं ये टर्म्स में तो पूछ रहा हूँ कि टोपोग्राफिकल मैप। सो नहीं नहीं वो नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, आपका मतलब वो तो ठीक है, जियोलॉजिकल एप्लीकेशन, जियोलॉजिकल मैप आपको एज ए रेफरेंस डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, बट मैं So ये पूछ रहा हूँ कि large scale map. हाँ हुआ है, लार्ज स्केल क्यों चाहिए? Because large scale map gives the accurate information of a particular small area, या यू आर एब्सोल्युटली, just या like cadastral map. yes you are absolutely right, very good. Actually suppose as Pankaj told कि in a particular it may be very small area, but the information that we are collecting, if you are using the large scale map, then a very detailed information can be mapped, as he rightly he told about the cadastral mapping 1:4000 scale mapping, that is a very large scale mapping. So in that case what will happen, you will be getting the very accurate information or detailed information, but your area will be very less, okay. But if you are going to have, if you are going to like compromise on your uh, accurate information or detailed information, तो आप क्या कर रहे हो कि आप थोड़ा सा स्केल को कम कर रहे हो। अगर मीडियम स्केल हो रहा है तो आपका इंफॉर्मेशन कम होगा, बट एरिया विल बी हायर, ज़्यादा होगा आपका लार्ज स्केल के हिसाब से। और ज़्यादा आप कर रहे हो, सपोज एक सिंगल मैप में आप आपका स्टेट को ले रहे हो या फिर एक कंट्री को ले रहे हो, तो ऐसे बहुत स्मॉल स्केल मैप आप यूज करोगे, तो इन दैट केस द ज्योग्राफिकल एरिया विल बी हायर, बट योर क्या आपका इंफॉर्मेशन बहुत कम होगा। चलो ठीक है, अभी कमिंग बैक टू द स्लाइड, जैसे हम लोगों का वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देखिए ये एक एक चीज को मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ईच एंड एवरीथिंग, तो लाइक व्हाट इज ए मैप प्रोजेक्शन, इन मैप प्रोजेक्शन वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द 3 dimensional ऑब्जेक्ट टू ए 2D surface and different type of projection are used. Then like geographic coordinate system, rectangular coordinate system, ये आप लोग जो है ना इसका डिटेल में यू हैव टू रीड इट, बिकॉज एक 1 आवर 2 आवर में इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक एक एक चीज को पढ़ना, इट इज नॉट टोटल, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो बट हाँ, अगर मान लीजिए किसी को कहीं पे डाउट हो रहा है, आप खुद घर में आप देख सकते हो, अगर कुछ कहीं पे हम लोगों का मदद चाहिए तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस, ओके। सो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन हम बोले, तो इन दैट केस लाइक उसका जो प्रोजेक्शन सरफेस के बारे में वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वेदर इट इज ए सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन और इट मे बी ए कोनिकल प्रोजेक्शन और इट मे बी ए प्लानर प्रोजेक्शन।
तो यहाँ like a question rises कि why we actually we have to choose different type of projection, because it depends on the surface of the earth कि आपका कहाँ पे आप ये projection लेना चाहते हो, which is your study area, like whether it is a equatorial area or it is a like polar region or it is some other region. तो based on that or based on your application, based on your suitability, आपको कौन सा मतलब आपको सूट कर रहा है, इन दैट केस यू हैव टू चूज द प्रोजेक्शन वेरी वाइजली, otherwise some sorts of distortion may come in your like आपका जो आउटपुट है ना, आउटपुट में यू मे हैव सम डिस्टोर्शन कुछ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है ना, ये कुछ ज्योग्राफी का चीज है, तो इसमें हम मैंने वेरी फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग माय फ्रेंड्स कि ये एक एक को हम अगर डिस्कस करें ना तो टाइम नहीं होगा। दैट्स जस्ट थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली आई एम ट्राइंग टू just go into this. So the next slide you can see, this is very popular projection system, that is UTM। जो लोग आप लोग RJS में या फिर अदर सॉफ्टवेयर में आप लोग अगर काम कर रहे हो ना, so you might be knowing about this. This is the universal transfer mercator, very popularly it is used actually in geospatial domain। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपका जो एरिया कैलकुलेशन वगैरह बहुत इजीली होता है और सो मेनी पॉजिटिविटी आर देयर, लाइक देन ये क्या है, अच्छा ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सी वी आर हैविंग सो मेनी प्रोजेक्शंस आर देयर, like we discuss about some conical, cylindrical, so many projections are there, but choosing a suitable projection is very important. So in that case, some like some parameters that play a very important role, like your location of your study area or your area of interest. Suppose you have to choose a projection, totally it depends on your study area and which type of projection is useful for you. Like for mapping polar regions, you can go for like azimuthal projection, or for mid latitudes region you should prefer a conic projection, and the same way like in equatorial region जो हमारा अर्थ हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पे suitably cylindrical projection is very suitable, I can say. And second one is like size and extent of the study area। आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा छोटा है या फिर मीडियम का है या फिर बहुत बड़ा एरिया है, तो इसीलिए इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू चूज इज वेरी वाइजली, बिकॉज एज it would guide you to choose a specific map projection. Distortion becomes a significant problem, जो अभी मैं बोल रहा था कि जो एरर आता है ना कुछ, उसको हम डिस्टोर्शन बोलते हैं। तो अगर आपका स्मॉल एरिया है तो वहाँ पे मे बी योर डिस्टोर्शन विल बी लेस, बट सपोज आप एक सब कॉन्टिनेंटल काम कर रहे हो, लाइक सपोज यू आर वर्किंग ऑन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लाइक सपोज आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कुछ इस स्केल में सपोज यू आर वर्किंग ऑन इन दैट स्केल, इन दैट केस एक्चुअली यू हैव टू चूज ए very wisely you have to choose the projection system. Then shape and orientation of the study area. Suppose आपका जो suppose you are working on some like क्या बोलते हैं कि आपका एक सर्कुलर शेप में है आपका एरिया, तो इन दैट केस azimuthal projection may be suitable. और सपोज टू स्टडी एरिया नॉर्थ टू साउथ में अगर सपोज इट इज इसको एक्सटेंड कर रहा है, देन यू कैन गो फॉर LCC जो लैम्बर्ट कॉन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन। तो इसमें यू प्लीज जस्ट स्टडी इट, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। देन जो मैं पहले बोल रहा था कि व्हाट इज ए मैप, जिस इसका डेफिनेशन है आप पढ़ सकते हो, बट वेरी ब्रीफली अगर मैं बोलूं कि इट इज ए ग्राफिकल टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ का जो फीचर्स है उसको हम एक ग्राफिकल टू डायमेंशनल प्रेजेंट टू डी फॉर्म में हम उसको वी आर प्रेजेंटिंग इट। देन हियर इज वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप अकॉर्डिंग टू स्केल, व्हाट टाइप ऑफ मैप्स आर देयर, बेस्ड ऑन द फंक्शन। Then we'll talk about something about scale, what is scale kya hai, then some important map elements like
title bar, where it is located in your map, where is the legend located, and what is the position of scale, then north arrow, and like different coordinate system, then border line, then what type of colors, symbols that you are going to use in your map. So these things are very important and we are going to study it. ठीक है? Then if I say कि in this particular slide, अरे ये slide change हो रहा है नहीं, मैं आपको भूल रहा हूँ. I'm not asking you actually whether the slide is changing now. I mean, Yes, sir. okay, Yes. fine. So now in this slide, like types of maps. So depending on your function or scales or so many uh, aspects are there, based on that actually maps are classified. So based on अगर scale में हम बोले कि it may be large scale or small scale map. Also there is medium scale maps, but broadly if I will say it's like large scale map. I think Mr. Pankaj, he was just talking about the cadastral maps. That is an example of large scale map, and topographical maps also comes under large scale. And in small scale we can say atlas, wall maps. In this type actually in atlas also you can see कि एक बड़ा एरिया जो है it can be portrayed in a very in a like क्या बोलते हैं आपका एक A4 साइज का जो साइज है ना उसमें साइज में आ जाता है. सो वो एक स्मॉल स्केल मैप है. एंड बेस्ड ऑन फंक्शन. Hello, सो sir. हाँ Yes. Actually, sir, on the basis of scale, there is three types of हाँ map. I already told कि also हाँ. medium scale are there. So topographical map basically falls under medium scale map. Sir. ये क्या है? सी दिस इज read some about sorts this. of controversy होता है. Like some school of thought they tell कि topographical map Yes, comes yes. under medium scale, but as I told कि I have taken it from your syllabus. So in this particular thing actually they kept it in large scale. That's why it is there only. Okay, sir. Okay. Okay, but it is a matter of I cannot say it is a matter of controversy, but things Yes. sometimes the division actually depends on your functionality and also depend on your objective, what type of study you would like to work. In that case also it varies. Okay. Yes. So, Okay, sir. yeah. Carry on. Yeah, then based on function actually we can say that if you would like to have some map to some physical and natural things, then reliefs map are there where elevation kind of things we get. Then geological maps, climatic maps, then weather related maps are there, soil classes, then natural vegetation. So these are some example of physical or natural or landscape based maps are there. But again we can have different cultural maps. Here also one may ask the question that sir why within this cultural, this agricultural, industrial maps are coming. But thing is again I will say the same thing ki, in your book only these things are written. So but we can again classify all this type of maps to different category also. Okay, so yeah, here you can say that the according to scale it is like large scale maps, then cadastral very 1:3960 exactly, but we say it as 1:4000. Then topographical map. See, you are right. Here it is the topographical maps. It is like 1:250,000 scale. So definitely it should be like in a small scale, but in the that slide actually in this particular slide, like they have kept it as a large scale map. छोड़ो उसको जो भी है. Then here wall maps are there, some examples are there. Okay, so based on function like we told about relief maps and other maps, geological maps, climate maps, ऐसे सारा different types of maps होता है. Suppose आपका कुछ ये question बनता है in your mostly it is like asked कि what is a map and types of maps ऐसा based on scale and some other. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. आई थिंक बिफोर वन आई थिंक yesterday or day before yesterday someone was asking about some important question. So definitely I can say that the question related to maps are very important. So in examination point of view, just go through it. Okay, then
what are the elements of maps, like इसके अंदर क्या क्या होता है maps के अंदर. We will be trying to go one by one. Not everything will be covered, but I'm trying to give you very basic things, like टाइटल कहाँ पे होता है. जैसे हम ऊपर में टॉप में वी राइट इट मोस्टली, टॉप में लेफ्ट में या फिर राइट में भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. देन लीजेंड जैसे मोस्टली वी कीप इट इन द राइट बटन, but it depends on you. Then definitely the scale, then the north arrow or the sometime we use compass, but mostly we use the north arrow. So these are some elements, and इसको छोड़ के भी and so many things are there. So it's like different elements of a map. Then in our map, actually what we are doing, we are portraying different type of things to a particular 2D surface. So if a layman, he or she does not have any idea about the map or any legend, he does not have any idea. That's why we give the legend. क्या हम जो वहाँ पे मैप में जो दिए हैं कौन सा चीज क्या है, which symbol represent what. So in that case, color composition of maps is very important. And some like जो traditionally or एक standard I can say कि like blue always represent water bodies like lakes, swamps, river, drainage, reservoir, and ocean. These are features. These features are always portrayed in blue color. Then in black color, like roads, railway, but mostly in sometimes road is again it is symbol, or it is we use red color. But like places name, border surveys, sport elevation, or using all levels, mostly we use black color. Then like area that are mostly clear of trees, field, plants, sand area, we use white color. Then for different type of vegetation, actually we prefer to use green. And like the to portray the contour lines, or in elevation type of things, we prefer brown color. Then human habitats like village, cities, and some other scattered type of settlement, or in all these actually we always prefer red color to use. Yeah, in this slide you can see like earlier also we have already talked about that point data, point line, and polygon. Actually we always portray our things in these three like point line and polygon. Like here you can see a topo sheet is there, and it is like a road is it is in line, and that settlement is there, it is in polygon. And also some points are there, it may be some location name or village name or something like that. Then in this slide, टाइप्स ऑफ मैप नेमिंग, आप इसको पॉइंट फीचर्स में नेम कर सकते हो, लाइन फीचर्स में, या फिर वॉट एवर बेस्ड ऑन योर कस्टमाइजेशन यू कैन नेम इट. देन here you can see interpreting survey of India topographical maps. ये इसमें आई कैन से कि आप लोग कौन कौन मतलब टोपोग्राफिकल आपका सर्वे ऑफ इंडिया इसमें आप लोग काम किए हो, कौन कौन यूज किए हो बताइए मुझे. देन विल मूव फॉरवर्ड. एनीबॉडी? I use this map in my You use, graduation level, sir. Then it is very useful for you, Pankaj. And whether you have downloaded it from, like now Survey of India, they are giving it in free of cost. Yes, sir. Actually, in my graduation time, I collected from the Department of Survey of India by physical. Yeah. But it is now available in OpenStreetMap. Now, yeah, that Yes. OS series is there, no? Free of cost, sir. Free of cost is there. So that is a good thing that we are getting those in our time. Like we were like wandering here and there to get a topo Yes, sir. sheet Yes, sir. to use that, because in that time nowadays in a virtual mode, if you people are studying,
सो इट इज अ लाइक ब्लेसिंग फॉर यू कि आप उसको पढ़ो ना पढ़ो बंद कर दो, कौन देखता है, नहीं। बट हमारे Yes, टाइम में yes. like we were very struggling to even get the books also. उसको बहुत इट वाज वेरी कॉस्टली ऑल्सो टू गेट प्रिंटेड, नहीं, उसको प्रिंट करना Yes, भी sir. बहुत Yes, sir. ज़्यादा पैसे लगते थे, और ऑल्सो दैट काइंड ऑफ infrastructure was not there. But now things are changing very quickly, and you are getting these things very smartly also. Yes, sir. Yes, yes. Yeah. तो एक्चुअली आप ऐसा सोचिए ना, ये जो क्लास है ना हमारा, ये ऐसा है कि इट्स लाइक इट, आई कैन से इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन. Yes, sir. Interactive session, sir. हाँ, Both. because ये, हाँ, for me also and for you guys also, because see what I do, like I'm guiding some students, some PhD scholars are there, तो they should be given free hand. उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए कि दे शुड यूज देयर ओन माइंड. एंड एक ट्यूटर क्या करता है कि वो उसका जो थॉट है ना, वो कहीं पे अगर वो अटक रहा है, कहीं पे स्क्वीज हो रहा है, तो उसको बस थोड़ा दिशा दिखाना, यही होता है, ये मेरा मानना है. तो ऐसा ही होना चाहिए. Yes, sir. Yes, yes. Yes. तो और एक काम करते हैं, अभी जो आपका आई थिंक 17-18 में तो क्लास नहीं है, तो आई थिंक 19 में है. तो 19 में आप लोगों का ये जो 19 और 20 में है शायद, और 2 क्लास है, और 2 क्लास में आपका ये जो यूनिट 1 MGY 1 को कंप्लीट करना है. तो आई विल ट्राई टू मेक स्लाइड इन दैट वे, तो और 2 क्लास में जैसे आपका वो सारा कंप्लीट हो जाए. ठीक है. Okay, 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 sir. तो अगेन सारे दिन जैसे मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ मटेरियल्स या फिर ये किताब का छोड़ के, suppose someone wants to have some sorts of like in publication and also in some other type of guidance, I am always there for you guys. क्योंकि ये जस्ट एक ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको आप ग्रैप्स कीजिए. क्योंकि हमारे टाइम में फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, हम लोगों को ऐसा नहीं मिलता था ये एक एक्सपीरियंस. और एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे ना, आपका बहुत सारे स्टूडेंट हो आप लोग, मतलब ऑल ओवर द कंट्री आप लोग हो. तो सपोज समवन इज हैविंग एन एक्सपीरियंस इन कोस्टल एरिया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और समवेयर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल स्टेट्स, and also some students are there from like Jammu Kashmir and Punjab and some other area. So you can interact or you can exchange your ideas. I think that is also very good. तो बस आज के लिए इतना ही है बस. तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस. एंड और कुछ पूछना है तो बोलिए आप. एंड्रयूज, Thank you, do sir. you Thank want you, sir. Mr. Andrews, you always speak. Today I don't Yes, know sir. why you are not speaking. Yes, sir, I'm here. Huh? Sir, you're talking in Hindi, sir. Can't understand something. Sorry. नहीं, actually what happened ना, I always try to speak in English, but sometimes very unknowingly. You were starting English, but continuously you suddenly change to Hindi. हाँ, so So, नहीं, I actually understand that, I do apologize some भाई, area. and I will be trying to not to go in that flow to speak in Hindi. But what happened now, here most of the students, they are actually they are speaking in Hindi. So like suppose Yes. Pankaj is asking in Hindi, at that time if I am like inclined towards Hindi and I'm just starting to speak in Hindi, so at that time then I am forgetting that yes, Andrew is there and he can't understand. That is happening actually, but not intentionally. So I will try my best to just to keep all the session in English further. Okay. Thank you, sir. Chalo. Thank you everyone, and Thank you, sir. we will be in touch on 19. Okay. चलिए, good night. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.